Hello students, welcome to today's class. How are you all? Good evening, Suman, Badari, students, Parth, Teeth. How are you? Sorry for the delay. And students who are joining from YouTube live, welcome to today's class. Harish, okay. So you have given the answer for yesterday's class. Okay, good evening, good evening. Just a minute, Harish. Let me just set up. Students, here is one teacher who wants to greet you. Can you see the teacher? Say hi to the teacher. Hello. Hello guys, how are you? Who is this teacher? Can I know? Hi. Nice. Okay. Hi, how are you? Shivam sir, yes, yes. Chemistry. Yeah. See you. All the best. Yeah. Class. Okay. Nice. So you saw your Shivam sir, right? How's the class? How is Shivam's class? Can I know? Yes, good evening. Yeah. He went off. Yes. Nice. Excellent. Very good. Nice. That's nice. Hello. Is my okay, but students, just a second. Let me do one thing. Let me start the poll and let me know is my audio, is my video, everything is visible or not. I'm launching the poll. Yes, let me know. JNV Badari students, let me know now. Harish, welcome. Yes, okay. Okay, just a second. That if that is the case, just a second then. Let me do everything. Okay. Let me rectify it. Yes, students, let me know is my audio visible now? Is my audio audible now? Sorry. Is it clear now? Let me know. Okay, students have said not at all. Okay, yes. Share screen is visible. Okay, let me know in the chat. Is my audio clear? Yes. Okay. Okay, cool. Thank you for your answer. Okay, so everyone has joined in today's class. Chitradurga, Ballari, Uttara Kannada, Yadgiri students. Sweetie Path, Tirth, Krishna, welcome to today's class. Harish will go through your answer in a while. Okay, I'll look into it at the end of the class. Is it good? Now, talking about what we are going to talk about today, students. So, okay, no background disturbance. Cool. Was there any background disturbance at that time? In the before I use this earphone, was there any background disturbance? Yes. Yes, Pav. Yeah. Yes, we are staying in the same quarters. Yes. So yeah, welcome to today's session. I'm going to directly into what we are going to study today. Okay. So we were talking about what work, power, and energy. Yes. So in today's class, we are going to talk about what. See, firstly, we'll recall everything. Then there is a small recall question. Okay. As we have lost 4 minutes of our time, so let us quickly focus on what we are going to study today. Then we are going to talk about spring potential energy. Then there is a numerical. Then we are going to talk about types of equilibrium. Then what stable, unstable, neutral equilibrium in types of equilibrium basically. Then we'll talk about what is stable equilibrium, what is unstable equilibrium, and what is a neutral equilibrium. Yes. Then that is the end of the class. Yes, Abhay, good evening. Good evening. So good evening everyone. Okay. Harish, let me know. Is it fine? So what I have said, can we look into your answer at the end of the class? Nice. Okay. So Yadgiri, Uttara Kannada, and Chitradurga, Ballari students, please let me know is everything clear with the thumbs up. Okay. Now, if that is the case, students, please tell me what we have talked in the last class. Do you remember what we have talked in the last class? Hope you remember it. Yes. We were talking about what? Gravitational potential energy. Yes or no?
where we told that, okay, there is a disturbance. Hello, is it clear? What is the disturbance? Can I know? Is there any disturbance in my voice? Let me know. Others, let me know. Uttarakhand students are saying there is a disturbance. Okay, Path is saying no. Others, can you let me know? Okay, no, no, no. Okay, so everyone is saying no. So Uttarakhand students, please join the session again. Thank you, Tirth. Tirth, Sweetie, Abhay, Suman, Parth are saying no. Uttarakhand students are saying there is a disturbance. So please join it again. Okay, so please join the session again. Okay, good. Now we were talking about what gravitation, potential energy. Yes or no? Where we got to know that. Okay, cool. No problem. So we were talking about what U, the potential energy was what, minus G M1 M2 by R. Yes or no? This was the gravitational potential energy that we got, and we had seen that there are basic assumptions over there. Yes or no? And I told you that the proofs or the digging to this gravitational potential energy is going to happen in which chapter? Which chapter? Let me know which chapter we are going to dig in, or let's say dive in deeper into this formula. Yes, very good. That is the eighth chapter. Okay, gravitation chapter. Yes, very good, very nice. Then you also know that you got lot of formulas before that. You know that the change in potential energy is equal to, sorry, change in potential energy lot of things to set up, lot of things in my table. Yes, it's like a buffet. Okay, delta U is equal to what, minus work done by the conservative force. This also you know. And also in yesterday's class we had gone through what, a problem. Do you remember what was the problem, students? The chain problem. I hope you remember that. Did you guys remember, and did you guys were able to understand it or not? Let me know in the chat. Were you guys able to understand it or not? What was there? There was a chain. There was a chain over here. Yes. And the chain had mass m. The chain had mass m. I'm going to what? Give a brief, let's say, overview of what we have done. It had mass m. Then we had to find the what? The potential energy, right? We had to find the potential energy. So what we do? We, instead of calculating the whole what potential energy directly, we knew that, see, since we know that here the heights are different. Yes, so what did we take? We use the method. What is the method? dm mass method. Yes, वो dm वो वाला dm नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, जो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप में dm करते हैं ना, वो नहीं है, डायरेक्ट मैसेज नहीं है ये. dm is what? dm is small mass. Yes, Abhay. Yes. So what did we do? We took small mass over here. Yes. So this was small mass. Let's say dm, and dm. How did we solve it? Do you remember? You know that this is at particular height. Yes, h1, or let's say this is at h2, and this is at h3, or this is at h4. And you know that if I take a particular dm, if I'm taking this particular dm, then what did I do, students? Do you remember? What did I do? I drew a line from here. Yes. Okay, sorry. What was the method? What was the method, students? Hope you remember. Yes. And also I told you that this angle is what? D theta. This angle is theta. Then what did we do, students? We know that for this dm, what is the potential energy? Let me know. For this dm, if the height is h2 and there is a small mass dm, what is the potential energy? Harish, okay, there is some sound. Okay, but Harish, people are saying there is no sound, so let me know. Yes, Path, very good. Sweetie and other JNV students, let me know. Let me know. Yadgiri students, Chitradurga students, what is the potential energy for this dm mass? Okay, Path, thank you. Thanks a lot. Students, Suman, Tirth, Sweetie, Trishna, why Uttara Kannada, Chitradurga, Bagalkot, Ballari students aren't replying? What is happening? Yes? Yeah, that is right. So we had taken it to be what?
Mg, sorry, DMG and H2. And I told you that if this is R, then it can be what? Let's say if this is R for the DM mass, and this is theta, then this comes out to be what? R sine theta and R cos theta. Then if that is the case, then the height comes out to be R sine theta. Then the potential energy came out to be what? DMG R sine theta. Then what did we do, students? We know that this is an arc that is going to form. Yes, this was the arc that formed over here. Yes or no? ये एक आर्क था, सही है कि नहीं? ये वाला अगर डी थीटा है, ये वाला आर है, इस आर्क लेंथ क्या है? व्हाट इज आर्क लेंथ? स्टूडेंट्स, व्हाट वाज आर्क लेंथ? लेट मी नो जल्दी. व्हाट वाज आर्क लेंथ? वाज इट आर्क डी थीटा? वाज इट आर डी थीटा? यस, वेरी गुड. देन व्हाट डिड वी नो? सी, मुझे ये पता चला कि ये वाला लेंथ है ना, ये वो जो वाला लेंथ है, ये क्या था? ये वाला जो लेंथ है, ये पूरा वाला, इसका लेंथ क्या पता चला हमें? इस पूरा मास का हमें पता चला ये क्या था? पाई आर बाई 2, है कि नहीं? यस और नो? यस, वेरी गुड. ऑल्सो वी केम टू नो दैट, देखो मुझे मास इधर से इधर चेक करना था ना, तो ये वाला अगर मैंने ग्राउंड लिया, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है. Yes or no, students? Let me know in the chat. Do you remember these things? Do you remember? Yes, very good, very nice. Now you know that the whole chain mass is what? M. Yes. Then मतलब उसका लेंथ क्या है? मतलब होल चेन ये, इसका ये होल चेन है, इसका लेंथ क्या होगा? What is the length of this? What is the length of M? pi r by 2 है ना, है कि नहीं? लेट मी नो. ये वाला लेंथ होगा ना, क्योंकि ये देखो, ये चेन था, अगर ये चेन है, ये वाला चेन था, तो ये पाई r by 2 है कि नहीं? दैट इज द केस, द लेंथ केम आउट टू बी पाई r by 2. वेरी नाइस. अभी मैंने क्या बोला? देखो, मैंने बोला कि जो पाई r by 2 के लिए होल मास मिल रहा है, तो मुझे ये बताओ, क्या इस आर डी थीटा लेंथ के लिए तो कौन सा मास मिलेगा? वो कौन सा मास था? वो डीएम मास था ना. सो डीएम इज इक्वल टू व्हाट? पाई इट वाज आर डी थीटा एम बाई पाई आर बाई 2. ऐसा नो? एंड हियर आर गेट्स कैंसल्स आउट एंड वी रोट डीएम टू बी व्हाट? डीएम टू बी 2m d theta by pi. Why did we do this? Why did we do, students? Because we got u is equal to dmg what? r sin theta. अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ना, तभी वो क्या है? ये u था, ये स्मॉल u था, सॉरी फॉर द स्मॉल मास. तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तभी मुझे पूरा मास का ये मिलेगा ना, है कि नहीं? That is why, and we integrated from du, which is equal to integration of what? From 0 to pi by 2, which you know. And I wrote this dm as what? 2m d theta by pi. Yes or no? So 2m pi r sin theta d theta. And at last, what was the answer you got? Let me know. What was the answer you got? Let me know, students. What was the answer you got? Do you remember when you solved this? What was the answer you got? जब आपने इंटीग्रेट du इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 किया, क्यों? क्योंकि वो था, फिर क्या था? लेट मी नो. 2mr by pi sin theta d theta. यस, तो क्या था? यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स. स्वीटी पक्का ना? वही था ना? दैट इज 2mgr by pi. ये आया क्या हमारे पास? यस, एंड दैट वाज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल चेन की जो पोटेंशियल एनर्जी था, ये था. इज इट क्लियर और नॉट? लेट मी नो, स्टूडेंट्स. यहां तक जो मैंने पढ़ाया था कल, यहां तक क्लियर है कि नहीं, बता दो. यस स्वीटी, वेरी नाइस. दैट वाज वेरी बिग. व्हाट वाज वेरी बिग? नहीं, इतना ही था. अच्छा, जो ये डेरिवेशन था. हाँ, वेरी गुड हरीश, वेरी नाइस. Others YouTube live students, if you have any doubt, let me know. Okay, please drop the comment. Yes, Tirth, Parth, is there any doubt? Uttarakhand students, let me know. Yadgiri students. Okay,
Did you just understand me? Let me know. Did you guys? Okay, पक्का नो? कुछ डाउट है? देखो मैं ऐसे देख रहा हूँ ना, कितना क्यूट हूँ मैं. Am I not cute? Who is this? Who is this? ये कौन है? Do you know? अच्छा अच्छा, ओके सुमन. पिकाचू. अच्छा पिकाचू. अरे नाइस. Yes. So everyone's favorite is Pikachu, right? Are Path. Everyone's favorite is Pikachu, right? So think this is me. If this is me, I'm everyone's favorite. Yes. Yes. Okay, Pikachu Harish, very nice. So yeah. Acha, okay. This is Pikachu is me, and I'm what? I'm very cute. Thank you, thank you, thank you. Okay, nice. So yeah, सबको clear है? अरे सुमन, thank you. Nice. Yadgiri students, please let me know in the chat. Ballari and Bhagalpur students, let me know. Okay. If you are not replying, I can't know whether it's understandable or not. अच्छा सुमन, पक्का. देखो क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स रिप्लाई नहीं देते, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं पढ़ाना स्टॉप कर दूंगा, मैं किसी और लेक्चर टीचर को बता दूंगा कि फिजिक्स पढ़ा दो. इज इट गुड? विल इट बी ओके टू एवरीवन? अरे नो, नहीं फिर रिप्लाई नहीं देते ना. अरे रे रे रे. पक्का पक्का पक्का. हरीश लेट मी नो. अच्छा नहीं चल. अच्छा अच्छा. हाँ वो तो है भाई. हाँ ठीक है. हाँ आप लोग तो देते हो, जो भी देते हो वो देते हो, वो मैं पक्का मानता हूँ. जो नहीं देते ना उनको क्या करें? व्हाट कैन वी डू? Okay, is it difficult for JNV, Chitradurga, Uttarakhand students are replying? Yadgiri and Bagalkot students ki isn't anyone available over there to reply? Arey na, that is not me. Okay, that can't be done. Okay, I'm here to make sure that everyone gets the knowledge. Okay. Yes. Okay. Ha Suman, pakka. Okay, Teerth, everyone, don't worry. I'll be here. I'll be here. Okay. Now, if that is the case, now we are going to what? Talk about a recall question. This is a very simple recall question. The question says, if a force 4.7 Newton is used to drag the loaded cart along the inclined plane for a distance of 0.9 meters, then how much work is done on the loaded cart? क्या हुआ? एक loaded cart है, ठीक है, ये वाला loaded cart है, इसमें पूरा लोड भरा, यहां इसको खींचा कितना तक का, कितना 0.9 मीटर्स तक, है कि नहीं? एंड द फोर्स यूज्ड वाज what students? 14.7. Yes, 14.7. So please let me know what is the answer for this. This is very simple students. Let me know. Oh yes, path. Okay, very good. हाँ बहुत सिंपल है ना, ये बहुत सिंपल था ना. जस्ट टू मेक श्योर दैट हाँ आप जो कर रहे हो ना, आपने किया है कि नहीं है, ये देख रहा था मैं बस कि पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं. बस ये रिकॉल टेस्ट में यही होता है मेरा कि आई शुड गेट टू नो दैट वेदर यू आर स्टडिंग और नॉट. अरे हरीश, नो नो नो, दैट कैन बी डन. ओके, because as I said, I'm here to share knowledge to everyone, to make sure that everyone gets. Yes, others let me know in the chat. Jaldi batao. I'll give you 30 more seconds. Let me know. Let me know. Others. Okay, very good. Uttarakhand students. अबे तीर्थ, बहुत सिंपल है ना. यस, वेरी गुड. स्वीटी, क्या हुआ? आंसर क्या है? हाँ, यस, वेरी गुड. सो एवरीवन इज यस, वेरी गुड. सो क्या हुआ? देखो, इन्होंने बोला कि एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, लेट द इंक्लाइन प्लेन बी, हमें फर्क नहीं पड़ता. इसमें उन्होंने बोला एक कार्ट है, ठीक है, एक कार्ट है, वो फुल्ली लोडेड है. तो उन्होंने क्या बोला? अबे व्हाट इज आंसर? उन्होंने बोला कि एक फोर्स लगाया, ठीक है, और उन्होंने बोला जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी इसी डायरेक्शन में हुआ. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 0.90 मीटर्स, है कि नहीं? एंड
and the force was how many? 14.7. Yes. Now you know that work done is what? Force into displacement. Force dot, sorry, not force into displacement, F dot S, and work done is equal to Fs cos theta. मुझे ये बताओ इसमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा इज इक्वल टू 0, देन द वर्क डन इज इक्वल टू F into S. So it is very simple. Then the work done was F is what? 14.7 into 0.9, and it comes out to be 13.2 joules. Yes or no? Students, let me know. It comes out to be 13.2 joules. This was the answer. Yes, very good. So whoever answered it, they are very good. Yes. So you are studying. That's nice. Yes. If you have any doubt, let me know. Okay. If you have any doubt, let me know. Yeah. Okay. If that is the case, then let us quickly dive into the topic of today's session. That is what? Spring potential energy. Now, what is the spring potential energy? What does it say? Now, let us take a scenario. Okay. Let us take a scenario. Harish, very good. Very nice. Okay. Yeah. In terms of joules, you can write. In terms of, instead of Newton per meter. Yeah. In terms of joules, you can write. Now, let's talk about a spring. Okay. Now, there is a spring attached to a wall. And here is your spring that is attached to your wall, and there is a mass M, and basically this is the surface basically. Okay. And what will I do is I will apply a force over here. Now students, we know that, or let us assume that we know the spring potential energy comes out to be what? U is equal to half into K into x square. हमें अभी फाइंड आउट करना है, देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है U इज इक्वल टू हाफ के एक्स, ये कैसा है? ठीक है, तो क्या है, मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये वॉल पे अटैच्ड है, इज इट गुड? ये स्प्रिंग है, ये वॉल पे अटैच्ड है, ये मास है, तो आई विल अप्लाई अ फोर्स फर्स्ट. ठीक है, अगर एक बार मैंने फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा? एक मिनट रुको, आई विल जस्ट इरेज दिस एंड आई विल टेल दैट ये एक फोर्स लगाया मैंने. ठीक है, तो क्या हुआ? फोर्स लगाने से ये जो मास था ये इधर तक आया. ठीक है, मतलब x1 डिस्टेंस तक, यहां से यहां तक x1 डिस्टेंस तक. फिर मैंने क्या किया? फिर से फोर्स लगाया, फिर से खींचा, क्या होगा? वो यहां तक आ गया, मतलब x2 डिस्टेंस तक, मतलब यहां से यहां तक x2 डिस्टेंस. समझे? क्या? डिड यू अंडरस्टैंड दिस सेटअप? यस और नो? क्या हुआ? एक स्प्रिंग है, एक वॉल पे अटैच्ड है, मैं इसको खींचूंगा, 2 बार खींचूंगा. ठीक है, एक बार खींचा x1 तक आया, फिर से खींचा x2 तक आया. यस और नो? अलिताने का सेट. Now students, if I am pulling the string, will there any be potential energy stored in the body? Will there any be potential energy stored in the body because of the pulling or the force that I have applied? Let me know. Yes. Yes. What is happening? Whenever you are trying to pull the body, what the energy that you are trying to give or trying to pull with will be stored as the energy that is what pulling due to the energy due to the pull is stored as what? Potential energy. So always remember students, देखो आपको जो ये potential energy दिख रहा है क्या? Does the potential energy is visible to you? So always note that what? Potential energy is a, yes, very good, is a invisible force. Sorry, potential energy is a invisible force. बोल सकते हो ये है कि नहीं? जो पोटेंशियल एनर्जी आपने जो दिया था, कैसे क्या हुआ कि आपने पुल किया, उसकी वजह से एक पोटेंशियल आया. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट it is imparted to the potential energy is it is imparted to the system. ठीक है, to the system, मतलब पूरा सिस्टम का ये होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है. इज इट गुड? अभय, पार्थ, तीर्थ एंड जेनवी स्टूडेंट्स, स्वीटी,
सुमन लेट मी नो, सुमन, कृष्णा, यहां तक पूरा सेट है? मैं स्लोली जा रहा हूं सच दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज. यस. नाउ इफ दैट इज अ केस स्टूडेंट्स, आपको पता है कि यहां मैंने क्या बोला, जब मैंने यहां एक बार पुल किया तो एक पोटेंशियल एनर्जी आया U1, और फिर से पुल किया तो एक और पोटेंशियल एनर्जी आया U2. यस और नो? नाउ स्टूडेंट्स, नाउ कैन यू फाइंड, आई वांट यू टू फाइंड द work done, find the work done by spring force, spring force, spring force in stretching from x1 to x2, x1 to x2. ऐसा नो? देखो क्या बोल रहे हैं यहां. देखो आपको पता है कि जब मैंने इसको यहां खींचा तो यहां एक स्प्रिंग फोर्स नहीं आएगा क्या, है कि नहीं? एक स्प्रिंग फोर्स आएगा. और आपको पता है कि ये स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू कितना है, और द टर्म व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस स्प्रिंग फोर्स? लेट मी नो. इज इट kx? Is it kx? You know that spring force is minus kx. Yes or no? मैंने क्योंकि यहां डायरेक्शन लगाया तो kx होगा ना? Yes or no students? Yes or no? Let me know. Let me know quickly. Let me know. Yes. Okay. Ha. Now, if that is the case, students, I want you to find the work done by the spring force in stretching from x1 to x2. क्या होगा ये बताओ? क्या हुआ? देखो एक स्प्रिंग था, ठीक है. मैंने क्या किया, एक मास अटैच्ड है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको पुल कर रहा हूं, तो ये एक बार x1 पे आया, एक बार x2 पे आया. मतलब ये x1 है और ये वाला डिस्टेंस x2 है. और आपको पता है कि जब x1 में है तो U1 पोटेंशियल एनर्जी आएगा, इसमें U2 पोटेंशियल एनर्जी आएगा, और एक स्प्रिंग फोर्स है. तो मुझे ये बताओ. यस पाथ, वेरी नाइस, वेरी गुड. यस. Others let me know. Okay, Abhay. The thing is, I have a spring. Okay, I have a spring, and for the spring there is a mass that is attached. Mass m is attached to the spring. Now, what I'm doing is, if this is mass, okay, ये वाला mass है, m mass है. Now I am applying a force. तो क्या किया मैंने, दो बार अप्लाई किया. एक x1 के लिए एक बार खींचा, वो x1 डिस्टेंस आया, फिर से एक फिर से मैंने खींचा तो x2 आया. लेकिन आपको पता है जब मैं उसको खींचूंगा, देयर इज अ स्प्रिंग फोर्स that comes into picture. Yes or no? You know, we have talked about in what, in Newton's laws of motion. You know that this spring force is what, minus k into x. Yes. And also you know that whenever I'm trying to pull, there is a potential energy that is what, imparted on the system. Yes. Now you know all this information. If that is the case, you have to find the work done by the spring force in stretching from x1 to x2. वो वर्क डन क्या है मुझे बताओ. वो वर्क डन क्या है? आपको पता है कि स्प्रिंग फोर्स क्या है? स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. तो मुझे बताओ मैं वर्क डन कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं? हाँ, तो x1 पे x2 है ना, एक बार x1 है एक बार x2 है. मुझे बताओ कैसे होगा? लेट मी नो. Let me know, students. See, over here, we know that the force, the spring force is what? Minus kx. Yes or no? We know that. So, the work done is basically from कहां से? यहां से ना. मतलब रेस्ट पोजिशन ऑफ मास से x2 तक, है कि नहीं? तो कैन आई राइट वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स और द स्प्रिंग फोर्स कैन बी व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ x1 to x2 into what? Since this is a what? वेरिएबल फोर्स. एक वेरिएबल फोर्स है. अगर एक वेरिएबल फोर्स है तो डायरेक्टली वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस नहीं लिख सकते, है कि नहीं? तो x1 to x कहां से? यहां से x1 to x2 तक ना. एंड व्हाट? द फोर्स इज माइनस kx dx. yes or no? Let me know in the chat, students. यहां तक सही है? यहां तक सही है? Because we know that the variable force के लिए क्या है? वर्क डन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ fx और dx, है कि नहीं? सम x1 to x2, ये वाला हमें पता है. किसके लिए? वेरिएबल फोर्स के लिए. वेरी गुड, वेरी नाइस. तो अगर मैं ऐसे करूं तो यू नो दैट, देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा. वर्क डन इज इक्वल टू द कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ, ठीक है मैं माइनस को अंदर ही रखूंगा. आई कीप माइनस अंदर ही. x1 to x2, ओके माइनस बाहर रखूंगा, माइनस के बाहर रखूंगा. एक मिनट रुको, माइनस के बाहर रखूंगा x
dx, है कि नहीं, ये आ जाएगा। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा, माइनस के इंटू यस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू x1 x2, वेरी नाइस। अगर मैंने इसको x2 में और x1 डाला तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के x2 स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के x1 स्क्वायर। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी बाई 2 है, बाई 2 है, बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा, लेट मी नो स्टूडेंट्स। अब मेरा वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू के x1 स्क्वायर माइनस के x2 स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं। नाउ दिस इज द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, यहां तक मिला। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको कैसे करें, लेट मी नो इन द चैट स्टूडेंट, इसको कैसे करें, हाउ वी फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, let me know, let me know how to find the potential energy. We know that potential energy is what, minus what, this one, yes or no, minus of the work done by the conservative force. अगर मैंने यहां माइनस डाला तो वर्क डन क्या हो जाएगा, let me know students, will it be half into what, k x2 square minus k x1 square ही हो जाएगा। let me know in the chat students, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, let me know in the chat, यहां तक सही है, yes, okay, yes, very nice, others okay, how do, very nice। हाँ, now देखो, yes, okay, मतलब ये क्या है, ये बेसिकली व्हाट पोटेंशियल है ना। सो पोटेंशियल क्या आया, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस के x1 स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले बताया कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग फोर्स है वो है क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन जब हमने डिराइव किया, आफ्टर डिराइव हमें क्या मिला, हमें मिला व्हाट इज द डिराइव, हाफ के इंटू x1 स्क्वायर माइनस, सॉरी x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। फिर हमें ये कैसे मिलेगा, ये वाला कैसे मिलेगा, कुछ डिड वी डू एनी मिस्टेक, or how will get it, how will we get it, or we can write it as half, let me write it fully, k x2 square minus k half k x1 square, x is equal to x2 minus x1 path, okay, what is that, x2 minus x1 is x, array no, that is what, x2 minus x1 is delta x, it is change, ये नहीं है वो, दैट इज नॉट एक्स। जुगाड़, हाँ सब कुछ जुगाड़ करो, ठीक है, ओके। सो बेसिकली व्हाट वी डू इज, आपको पता है कि एक स्प्रिंग था और आपने खींचा एक बार इधर और एक बार इधर, है कि नहीं, सही है, x1 और x2, और आपको पता है कि एक बार u1 और u2 आ गया। अच्छा हाँ, तो मैं बताऊंगा कैसे लेना। देखो, आपको पता है कि ये u1 है, ये u2 है, ठीक है, डाउन करिए स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। व्हाट वी डू इज we basically take at any point the potential energy to be zero. We take potential energy equal to zero wherever we want, ठीक है, but it is the potential energy from the from the point of rest, मतलब यहां से रेस्ट से जो हम लेते हैं ना वो हम जीरो लेते हैं। तो मान लो मैंने क्या u2 जीरो लिया, इसका मतलब क्या है, x2 जीरो है कि नहीं, यस और नो। और मान लो अगर कंफ्यूज हो रहा है, मान लो मैंने u1 जीरो लिया, ठीक है, इसका मतलब x1 जीरो है कि नहीं। आपको पता है ये क्या है, ये था डेल्टा यू था ना, जो ये था ये डेल्टा यू था बेसिकली, यस, डेल्टा यू इज इक्वल टू, सही है। तो कैन आई राइट स्टूडेंट्स, कैन आई राइट नाउ u2 माइनस u1 इज इक्वल टू हाफ इंटू के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर, सही है। अब मुझे ये बताओ, मैंने अगर ये कंडीशन डाला तो यहां ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। देन यू गेट u2 टू बी हाफ के x2 स्क्वायर। यहां से हमें ये वाला
ये वाला मिल गया है कि नहीं? यस और नो स्टूडेंट्स, लेट मी नो इन द चैट। समझ में आया? व्हाट वी डू, we assume that it in any one place, we assume that what we take the potential energy. Sir, you too, I didn't get you भाई। तो फर्क नहीं पड़ता ना, देखो u2 अगर ये वाला फॉर्मूला था तो इसके ऊपर मैंने u2 डाला मतलब x2 था, अगर मैंने u1 डाला तो x1 था, बस वही था और कुछ नहीं, ठीक है? उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। यस स्टूडेंट्स, लेट मी नो इन द चैट व्हाट वी डू। नोट नोट, यहां से फिर हम यहां गए, ठीक है? यस दावणगेरे, ओके दावणगेरे स्टूडेंट्स, चित्र ओके भाई, चित्रदुर्ग स्टूडेंट्स आर नॉट रिप्लाइंग टुडे। बल्लारी बागलकोट स्टूडेंट्स, लेट मी नो इन द चैट। हरीश, इज इट क्लियर? हरीश यहां तक क्लियर है? एंड अदर्स, अमृता, आई गेस अमृता हैज जॉइन्ड द सेशन। हरीश, लेट मी नो। ओके पक्का पक्का, तो एक बार 1 मिनट दे रहा हूं ग्रास करने के लिए। क्या था हमारे पास? एक स्प्रिंग था और एक मास था, पुल किया x1 टू x2 तक, फिर हमें पता है कि स्प्रिंग फोर्स इतना है कि नहीं? है कि नहीं? देन व्हाट डिड वी डू, वी नो दैट कि हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। क्या था क्वेश्चन? क्या था क्वेश्चन? था वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए। तो वर्क डन कैसे फाइंड आउट करता है? हमें पता है कि फोर्स इतना है, वो फोर्स क्या है? वेरिएबल फोर्स है। अगर वेरिएबल फोर्स है देन द इक्वेशन इज दिस, देन द इक्वेशन इज दिस, है कि नहीं? देन वी नो दैट वर्क डन इज व्हाट दिस, सॉरी, then the work done is this। फिर हमने किया है क्या? सब कुछ इसमें क्या डाला, जो भी वेरिएबल्स था, we just inserted or substituted to it, then we got what the potential change in potential energy to be this। then what we did was we assume that we take at any particular point, मतलब u1 में हो सकते हैं, u2 हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी, क्या होगा? वो 0 होगा। तो हमें क्या आया कि u2 इज इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वायर। समझे? Let me know in the chat students with the thumbs up whether you have understood it or not। Davangere students, Ballari, Bagalkot, okay sweetie, very nice। Uttar Kannada, very good। Krishna, Tirth, yes। Abhay, Path, let me know। अच्छा पक्का, okay, if that is the case, अगर हाँ, तो एक याद रखना, एक नोट याद रखना, एक नोट, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, अगर आपको नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आया तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। स्प्रिंग में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑलवेज क्या? ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है? कहा? स्प्रिंग में। इज इट गुड? यस, वेरी गुड। इफ दैट इज अ केस स्टूडेंट्स, इफ दैट इज अ केस, कैन आई डू वन प्रॉब्लम? कैन आई गिव यू अ प्रॉब्लम? देन हो जाएगा? कर सकते होगे? कर सकोगे? हरीश, वेरी नाइस। सो द क्वेश्चन इज, okay, very good, Parth and Sweetie। The question says, okay Abhay, very nice। There is a spring, ठीक है? स्प्रिंग था और उस स्प्रिंग में एक मास अटैच था F। सिमिलरली क्या हुआ? एक फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद वो डिस्प्लेस हो गया एक बार डिस्प्लेस हो गया, कहा? 1 मीटर तक, और फिर से मैंने उसको फोर्स लगाया तो डिस्प्लेस हो गया कितने? 2 मीटर तक, ठीक है? और जो स्प्रिंग फोर्स है ना, जो K है वो है 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है? ये सब दिया है। सो द क्वेश्चन सेज find the work done by spring force, find the work done by spring force in stretching from
from x is equal to 1 to x is equal to 2. बस ये फाइंड आउट करना है, बस इतना ही करना है. लेट मी नो स्टूडेंट्स इन द चैट. पार्थ, check your answer once. Check your answer once. Check your answer. So I am giving you exactly 3 minutes of time to solve this. Here's a timer. Sorry. Okay. Here's a timer. Path, very good. Very nice. Harish, let me know what is the answer for it. Check your answer, Ballari students. Bagalkot students, very good. Yes, Bagalkot students. Yes, Chitraduga students, Sweetie, very nice. Actually, Sweetie has given the right answer. If I see it, Sweetie has given the exact answer that is required. Okay. Last 1 minute. Let me know in the chat. Harish, check your answer once. Check your answer. Amrita, check your answer. Abhay, yes, let me know what happened. Did you give the answer? Uttarakhand students, very good. Abhay, okay, that's the right answer, but it is not exactly that answer. I'll tell you the answer. The exact answer is, the answer for this question is minus 150 joule. Everyone is giving 150 joule, but the exact answer was given by Sweetie and Uttara Kannada students. Yes. So yeah, so everyone has given the right answer. So I'm stopping. See over here how to solve this. So they have asked you to find what? To find the work done. है कि नहीं? Work done. Now you know that this is a variable force, that is spring force. आपके दिमाग में पहले क्या आएगा? Work done is equal to integration of x1 x2 f what f dx. ये आपके दिमाग में आएगा क्योंकि f is equal to k into x. ठीक है, ये दिमाग में आएगा. लेकिन इसको करने की जरूरत है क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि u2 minus u1 is equal to what? Minus work done. है कि नहीं? अभी आपको पता है u2 क्या था, अभी आपने फाइंड आउट किया. अगर जब स्प्रिंग फोर्स है, व्हाट इज u2? व्हाट इज u2? हाफ इंटू k इंटू x2 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू k इंटू x1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वर्क डन. यस. नाउ यू नो दैट आई विल टेक हाफ इंटू k. क्या था? k 100 है, मैं इसको बाहर निकालूंगा. x2 क्या था? व्हाट इज x2? x2 is 2, that is 2 square minus 1 square is equal to minus work done. Yes. And you know that 2 ones are 250s are 50 into what? 4 minus 1 is equal to minus work done. And you know that minus work done is equal to 50 into 3 कितना आ जाएगा? 150. And अब आपका आंसर आएगा work done is equal to minus 150 joules. So make sure that you are not messing up with the what? With the signs.
ओके जो आपका साइंस है ना उसको आप बहुत परफेक्टली लिखना पड़ेगा, वरना आपका जो आंसर है वहां गलत हो सकता है। कहा, जब आप मान लो मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस में ऐसा दिया a इज इक्वल टू 150 और b इज इक्वल टू 150 माइनस 150, c इज इक्वल कुछ और दिया, ठीक है 50 वगैरह 50 एंड d इज इक्वल टू 100। लेकिन आपके जो जब आंसर दिया ना आपको पता चला कि 150 है, हरी भरी में आपने इस साइन को नहीं देखा, आपने इसको टिक किया, इसको टिक किया, तो क्या होगा, ये गलत होगा ना, ये गलत होगा। सही है? यस और नो स्टूडेंट्स, लेट मी नो इन द चैट। हाँ, तो ये गलती मत करना, ठीक है। हरीश वेरी गुड, ओके, यस वेरी गुड। So make sure that you are very focused, you know what you're doing. Okay, is it good? Very nice. See, in JEE, let's say in JEE, for every answer that you make, let's say if there is question number 1, if you give a right answer, if you give a right answer, then you will get plus 4 marks. But if you give a wrong answer, then it will be what? minus 1 marks. ये बहुत है ना, तो आपका टोटल मार्क्स 3 आएगा, लेकिन 3 की वजह से ना आपका रैंक कहां से कहा जा सकता है। 1 मार्क से भी आपका रैंक बहुत बहुत मैटर करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। यस, सो मेक श्योर दैट कि आप ऐसा ना करो, इवन इन नीट, ठीक है। या लाइक इफ यू डू मिस्टेक्स, यू आर लाइक, जो आपको मार्क्स आने थे जो बहुत सिंपल थे उससे आपने मिस्टेक किया है कि नहीं, तो ऐसे मिस्टेक्स मत करो, ठीक है। हाँ, नीट, in NEET also you will get what? plus 4 marks, yes or no? And if you do any mistake, what will happen? You won't get that marks at all, yes or no? Yeah, so yeah, we'll do one thing, okay, we'll do one thing. So we'll have a session where I'll show you the exact, let's say the marks, the syllabus, how many number of questions, okay. Yes, Abhay, no problem. Amrita will do that, okay. Probably I'll do in the on Monday itself. On Monday before class, before starting the session, I'll show everything, okay, कि कितना questions आता है, कैसे क्या what can I say, the pattern, I can say the pattern also, okay, I'll show the pattern also, so it will be very clear for you. Is it good, Amrita, sweetie? ठीक है ना? हाँ, okay, very nice. Now if that is the case, students, then we'll be talking about something called equilibrium. अभी मुझे बताओ, ये आपने ये इक्विलिब्रियम कहीं सुना है? कहीं सुना है? मेरे मुंह से सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो क्या करें, बाहर निकाल दूंगा अभी। सुना है इक्विलिब्रियम? व्हाट इज दिस इक्विलिब्रियम? यस, ओके, तो ये इक्विलिब्रियम क्या है ये बताओ मुझे, व्हाट इज दिस इक्विलिब्रियम? हाँ, सुना तो होगा, राहुल सुना तो होगा ना, ये नाम तो सुना होगा। तो इक्विलिब्रियम क्या? बैलेंस थी नहीं, ठीक है, इक्विलिब्रियम नाम तो सुना ही होगा आपने। कृष्णा, ओके, ओके, अमृता, व्हाट हैपेंड केमिस्ट्री? नो, in wait, we were talking about Newton's laws of motion, right? In that I have talked about equilibrium. Yes, Chitradurga students, very good. Abhay, very good. Others, ठीक है। देखो, आप ये पिक्चर्स देखकर ना, ये पिक्चर्स देखकर ये मत बोलो, ये जो पिक्चर देखा ना इसको देखकर मत बोलो, कुछ और बोलो, जो आपको पता है वो बोलो। ये पिक्चर देखकर बता रहे हो, मुझे पता था। Sir, answer of yesterday's homework question given starting of session. No, I didn't give the answer. I'll give the answer at the end of the session, okay? I'll tell the answer. Harish also has asked the same question, okay? Acha, equal balanced reactants equal products. Okay, Amrita, got it. Yes, okay, Abhay, very good. Uttarakhand students, is it good? Stay after the class, okay? Yes. What does equilibrium means? Equilibrium means जो नेट फोर्स है ना वो 0 है, वो बोल सकता हूं। मतलब अगर मेरा एक बॉडी है, लेट्स टेक अ बॉडी एंड इसमें एक फोर्स लग रहा है, F1 force, F2 force and F3 force. So if my
net force that is acting on the body is 0, then we say that the body is in equilibrium. Yes or no? That means what? F1 plus F2 plus F3 equal to 0. ये वाला इक्विलिब्रियम है, सही है कि नहीं स्टूडेंट्स? लेट मी नो. यस, तो ये है इक्विलिब्रियम. या वेरी नाइस. Okay, sweetie, very nice. So actually, I had a concept to tell. I'll tell the concept in next coming class. Okay, before the equilibrium force, no problem. Yes. Now, when you talk about equilibrium forces, there is what? The type of forces. What are the type of equilibrium forces? Yes. What are the type of equilibrium forces? The first type is what? Stable equilibrium. The second type is unstable equilibrium, and third is neutral equilibrium. Okay. These are the three types of equilibrium forces. Good? Is it good? So as we have only 9 minutes left, what will I do is, students, remember that we are going to talk about what? Stable, unstable and neutral equilibrium in the coming class. Okay. Tamangiri students, what happened? What happened? Okay. Now, if that is the case, let us do one thing. Since we have only 8 minutes of time left, let's do one thing. Okay, let's do one thing. Instead of talking all these things, okay, we will talk about yesterday's homework. Okay. So one thing, remember what is happening. Equilibrium is what is equilibrium? When net force is 0. Yes, that is called equilibrium. And what are the types of equilibrium? There are three types. So what are those? Stable, unstable and neutral equilibrium. Okay. So we will be talking about these things in the coming class. Now, if that is the case, students, we will talk about yesterday's homework. Do you remember yesterday's homework? Yesterday's homework. What is the question? Just a second. I'll check the question once. I'll check the question. What is the question? Do you remember the question? Okay. Harish and Uttarakhand students, check the answers. Okay. The question said force was given to be x square I cap plus y into j cap plus z square k cap. Yes or no? This was the thing. Yes, Parth, the right answer. Okay. Yes, Parth, that is the right answer. Very good. Very good. Yes, Suman, very good. Very nice. Yes. And also, it was given that U of 0, 1, 1 is equal to 10 joule and U, 2, 3, 2 was to be found out. No, sweetie, that is not the right answer. Check your answer now. So basically, they are telling this is the initial potential energy, and this is the final potential energy. Now you need to find what the final potential energy. So students, can I write initial final potential energy minus initial potential energy is equal to integration of or minus integration of fx minus hoga minus fx dx plus integration of fi dy plus integration of fz dz. Hey ki nahi? Can I write this, students? Let me know in the chat. Yes. Why? We know that change in potential energy is equal to minus work done, and you know that the work done अगर variable force है तो क्या है? Integration of f dot dr है. ये आपको पता है. Very nice. Now students, over here this is x1, this is y1, this is z1, this is x2, this is y2, this is z2. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये x1 to x2 तक, y1 से y2 तक और z1 से z2 तक. और आपको पता है फाइनल को आपको फाइंड आउट करना है. u फाइनल माइनस इनिशियल क्या है? 10 इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या होगा स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन ऑफ x1 क्या है? x1 0 है, 0 से कहां तक? 2 तक. एंड fx इज ये x स्क्वायर प्लस कहां से कहां तक? y1 1 से 3 तक. एंड fy क्या है? y dy, ये y dy है, ये x स्क्वायर dx है. एंड स्टूडेंट्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ z1 कहां से? 1 से कहां तक? 2 तक. एंड यू नो दैट इट इज व्हाट? fz इज z स्क्वायर dz.
तो मुझे बताओ, मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा? सॉरी, इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स? uf माइनस 10 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? लेट मी नो इन द चैट व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. What is integration of x square? Just a second. Yeah, okay students, sorry for the delay. So I got a call. So integration of क्या होगा? हाँ हाँ कोई नहीं. So integration of x square, what is integration of x square? Minus एक था, that is what? X cube by 3, and it is from what? It is from 0 to 2. Next it is what? Plus y था ना, integration is y square by 2 from what students? 1 to 3, and plus z square था, so z3 by 3, z cube by 3, and it is from 1 to 2. Now students, if I put everything uf minus 10 is equal to minus, इसको मैंने ये किया तो क्या होगा? 3 what 8 by 3 है कि नहीं? 2 cube is 8 by 3 minus 0 plus 3 square is 9 by 2 minus 1 by 2 प्लस ये कितना होगा? 8 by 3 minus 1 by 3. सही है? यहां तक सही है? वेरी गुड. uf minus 10 is equal to minus of 8 by 3 प्लस ये क्या होगा? अगर मैंने इसका एलसीएम लिया तो 2 है, तो 9 minus 1 प्लस इसका एलसीएम 3 है, 8 minus 1, and you get uf is minus 10 is equal to what? Minus of 8 by 3 प्लस ये क्या? 8 by 2 होगा, 4 होगा, एंड दिस विल बी 7 by 3 प्लस 7 by 3. और मैं इसको 7 by 3 और 8 by 3 को ऐड करूंगा तो क्या होगा? uf minus 10 is equal to 8 by 3 और 7 by 3 is 15 by 3 minus of 15 by 3 है कि नहीं? Yes or no? Plus 4. Now students, if I do this, what will I get? Let me know. सही है? यहाँ तक सही है स्टूडेंट्स? लेट मी नो इन द चैट. स्टूडेंट्स. yes. Now if that is the case, we get uf minus 10 is equal to minus of, अगर मैंने इसका एलसीएम लिया तो 15 plus 12 by 3, and you get uf is equal to minus of 1527 by 3. yes or no? minus प्लस 10 हो जाएगा अभी, एंड uf इज इक्वल टू, अगर मैंने फिर से एलसीएम लिया तो 27 प्लस 30 by 3, and it will be 3 by 3, and you get 1 joule. Yes or no? Uttar Kannada students, let me know, and Harish, let me know. And you got the answer to be what? 1 joule. Yes or no? Yes. Okay. While you check your answer, I'm launching the NPS poll. Yes. So please answer the NPS poll, students. Please answer the NPS poll. Please answer the NPS poll and let me know, is it clear or not? Is the answer clear or not? Amrita, let me know. Harish, let me know. Very good. Everyone has to answer the NPS. Make sure that you answer the NPS. Okay. Yes, yes, Jain Vichitradurga students. Answer yes, one is correct. Yes. Now students, if that is the case, we are going to talk about the summary of today's session. So initially we talked about what? Gravitational force. In gravitational force,
We talked about what in recall. We talked about the numerical that we solved yesterday. Then we went to what? What students? Do you remember what we went to? We went to spring force. We went to spring force, in which we got to know that the spring force potential energy is half kx square, where we proved it, yes or no? And also we solved a numerical number. And students, what is the number of equilibrium? What equilibrium force also we talked about. And what is the types of equilibrium? The types of equilibrium. Types of equilibrium is, yes, three types. What are those? What are those? The first one is stable. The second one is unstable. Very good. And third is neutral. Very nice. Very nice, students. Very good. Very good. If that is the case, students, yes, that's all for today. I'm ending the poll. Thank you for attending today's session. So we'll be tomorrow meeting in what? Monday's class. Okay. So please make sure that you're studying, you're loving physics, and what you're coming to my classes. Okay. Okay. Cool then. See ya. Bye bye. Take care, YouTube live students. Bye bye. I'm ending the session. And